इंग्लिश रो मॉडल एक्चुअली वर्ब मॉडल वर्ब जा कहूँ आम मॉडल्स इन इंग्लिश आज हम पढ़ा. So before going to modals, let me tell you that English verb has different forms. English verbs especially have different forms, and if you will divide those verbs, they can be divided into two types. If we will divide the structural words, that is called verb. English verb especially, they can be divided into two types. What are those? Auxiliary verb and main verb. Verb, suppose verb is there, they can be divided into auxiliary verb and main verb. So here we'll not discuss especially about main verb. We'll discuss auxiliary verb. And এই auxiliary verbটা পুনি দুই প্রকার ভাগ हुए. সেটা হচ্ছে প্রাইমারি অক্সিলারি ଆଉ modal auxiliary. Primary auxiliary ଆଉ modal auxiliary. Then primary auxiliary verb जदि आमे देखिबा, there are three primary auxiliary verb जहा कि होछि be, have ଆଉ do. तीनटा what primary auxiliary verb. be रो 8टा फॉर्म अछि, have रो 3टा फॉर्म अछि एवं do रो 3टा फॉर्म अछि. be होछि am, is, are, was, were, be, being, been. केतरा am, is, are, was, were, be, being and been. ए भलिया 8टा फॉर्म. then have has 3 forms, 3टा फॉर्म. have, has, had ଆଉ do ର 3ଟା फॉर्म, do, does and did. से भलिया आमे जदि जीवा मोडल ऑक्सिलरी पाखकू, मोडल ऑक्सिलरी को भी दुई भाग रे विभक्त कराई छि इंग्लिश रे. कोन कोन व्हाट आर दोस टू मोडल ऑक्सिलरी देन? सेटा होछि प्योर मोडल आउ मार्जिनल मोडल. प्योर मोडल एंड मार्जिनल मोडल एटा भी दुई भाग रे विभक्त होई छि. तो प्योर मोडल कहिले प्योर मोडल टोटल मोडल होची 13टी. केतोटी 13 मोडल्स आर देयर. तापर मोडल लाइक एक्सप्रेशंस अछि आउरी बहुत सारा. बट मोडल्स प्योर मोडल्स स्पेशली इन इंग्लिश मोडल्स आर ऑफ 13 टाइप. 13 प्रकार मोडल अछि. 13 प्रकार. ए प्योर मोडल भितरे शैल, शुड, विल, वुड, कैन, कुड, मे, माइट आउ मस्ट नॉट इजिबो. ठीक अछि. कोन कोन शैल, should, will, would, can, could, may, might and must, must, must. These are pure modals. And marginal modal भितरे तमरा आइला चारोटी ought to, used to, then need, तापर आइला डेयर. यही चारिटा होची मार्जिनल मॉडल. सो शैल, शुड, विल, वुड, कैन, कुड, मे, माइट एंड मस्ट. दीज आर योर प्योर मॉडल्स. देन मार्जिनल मॉडल्स कोन कोन ought to, used to, need, dare. एमारे होचंती सब कोन मार्जिनल मॉडल. अच्छा, एटी प्रश्न उठे why these modals, 4 modals are called marginal modals. The other name of marginal modal is semi modal. मार्जिनल मॉडल रो अन्य नाम होची कोन सेमी मॉडल. सेमी मॉडल कहिले तमे जेमति सेमी बाउल्स आर देयर इन इंग्लिश रे जेमति सेमी बाउल अछि सेही भलिया मॉडल्स भी सेमी मॉडल्स अछंती. सेमी मॉडल्स कहिले हाफ मॉडल्स एंड हाफ मेन वर्ब. दे आर कॉल्ड सेमी मॉडल्स माने आधा मॉडल और आधा मेन वर्ब. एंड these 4 are called what? Semi modals. The reason is that sometimes they are used as modal, sometimes they are used as main verb. That's why these 4 are called kona semi modals. And these are pure modals. Why they are called pure modals? The reason is that they are only used as modal auxiliary verb and they have no other uses in English. That's why they are called pure modals. तो यही जो नौटा रहा शैल, शुड, विल, वुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट 9टा आउ एपट रहा 4टा. यही 13टा होचंती इंग्लिश रे स्पेशल मॉडल. स्पेशली दे आर मॉडल्स. Modal like expressions are there. English रे अछि modal like expression. Modal like expression जेमति कि तमरो कहि परिबो तमे have to, has to,
these are your modal like expression. Is to, am to, are to, must, these are modal like expression. Auri achhanti bahut sara modal like expression, but no modals are there, only 13 modals are there. So sum total there are 27 auxiliary verbs in English, including their form. जदि सब फॉर्म को मिसेबा 27 टा ऑक्सिलरी वर्ब ए भलिया इंग्लिश रे अछंती केतरा देयर आर 27 ऑक्सिलरी वर्ब इंक्लूडिंग देयर फॉर्म. आ जदि प्योर ऑक्सिलरी वर्ब कहिबा विदाउट देयर फॉर्म टोटल केतरा हबो 13 3 16 टा. जदि फॉर्म सब को मिसे दवा ताहले 27 ही जिवे. जेमती 8 बी रो 8 टा फॉर्म, हैव रो 3 टा फॉर्म 8 3 11, डू रो 3 टा फॉर्म 14, देन आसिला तमरो कोन प्योर मॉडल्स 9 टा एवं मार्जिनल मॉडल 4 टा. ए भलिया टोटल होची 27 टा ऑक्सिलरी वर्ब इंग्लिश रे अछि. तो पिले वर्तमान आमे जिबा मोडल ऑक्सिलरी रो यूज ऊपर को. व्हाट आर द यूजेस ऑफ मोडल ऑक्सिलरी वर्ब, एंड लेट अस स्टार्ट विथ यूजेस ऑफ विल. तो एठी आ गोटे प्रश्न नॉर्मली डेराइव करे, व्हाट आर मॉडल्स. व्हाट आर मॉडल्स, मॉडल्स कहले कौन नहीं प्रश्न उठे. व्हाट आर मॉडल्स एक्जैक्टली. So modals are those auxiliary or helping verbs that tell us whether the speaker consider an activity or state or probable or possible, or what she thinks of someone's ability or willingness. This is the definition you can write if you want to write. What is it? Again I am telling, modals are those auxiliaries or helping verbs that tell us whether the speaker consider the activity or state or probable or possible, or what she thinks of someone ability or willingness. जनकर एबिलिटी विलिंगनेस विषय जते जने लोक कथा होछि सेते जो क्रिया सब व्यवहार करे ताको आमे मॉडल ऑक्सिलरी बोली कहि थाउ. एंड दीज आर हेल्पिंग वर्ब. यांको आउ कोन को जाय हेल्पिंग वर्ब बोली कोहा जाय. सो वर्तमान जिबा आमे आउ गोटे जदि डेफिनेशन देखिबा, मॉडल आर दोज ऑक्सिलरी वर्ब्स व्हिच एक्सप्रेस द मोड ऑफ एक्शन denoted by the main verb. This is the shortcut definition. कौन को आ जाए परे, modals are those auxiliary verbs which express the mode of action, the mode of action denoted by the main verb. मेन वर्ब द्वारा जो मोड ऑफ एक्शन को व्यवहार माने व्यक्त करिवा पाई जो वर्ब गुडी को हम व्यवहार करथाउ सेमानकु हम मोडल वर्ब बोली कहिबा. However, whatever happens are usually used to express the different action. मोटा मोटी भावे जदि कहिबा, modals are verbs that are used to express different action. What are those different action? Like ability, power, permission, request, possibility, willingness. Remember, आउथरे मु कहूची ability, power, permission, request, possibility and willingness. यही सब व्यक्त करिवा पाए मोडल वर्ब गुडिकन व्यवहार ही थाए. ओके, so let's see an example. Jemti I can lift the box. So what happens here? Here can is a modal and they are normally used after the subject. So can is a verb, and here what happens? Can shows the ability of the speaker I that he is able to pick up the box, lift the box. नहीं आउ कैन रो अर्थ होची बी एबल टू. कैन रो अर्थ हला बी एबल टू. दिस इज द मीनिंग ऑफ कैन. सक्षम बा पारिबा जहा को कहछ पारिबा अर्थ रे हम व्यवहार करथाउ. वर्तमान आमे आरंभ करिबा द यूसेज और द रूल्स. कोन कोन नियम रहिछि या पछरे को वर्ब टा केते बेले कोन पई व्यवहार होचे. सो यूजेस ऑफ विल. लेट्स स्टार्ट विथ विलिंगनेस कहले इच्छा भ्रमर. सो यूजेस ऑफ विल, प्रथम जिनस हला यूसेज ऑफ विल. विल कौन कौन पाई व्यवहार हुए? द मॉडल ऑक्सिलरी विल. सो फर्स्ट रूल सेज दैट द मॉडल विल इज यूज टू एक्सप्रेस सिंपल फ्यूचर. प्रथम जिनस नंबर 1 टू एक्सप्रेस सिंपल फ्यूचर. सिंपल फ्यूचर जो आम जहाँ को फ्यूचर इंडेफिनाइट बोली कहे. प्रथम जिनस सिंपल फ्यूचर. ओके,
सो व्हाट हैपेंस हियर विल आउ शाल दुईटा ऑक्सिलरी अछि मन रखिबा तो जेते बेले हमें मु एठी मन कर लिखिली आई शैल गो and I will go. Now, can you tell me what is the difference? What is the difference? Who can tell me? I shall go and I will go. What is the difference? Can you tell me? Anybody can tell me? So here, what happens? I shall go and I will go. What is the difference? Anybody can tell me? कि कही परिबो कोन डिफरेंस अछि ए भितर बिले shall and will कान्हा okay shall and will but what is the different of use मु पचार छी what is the use different of use एठी जो दुईटा यूज है छी को सेंस रे व्यवहार है छी सो लेट मी एक्सप्लेन नॉर्मली shall टा फर्स्ट पर्सन संगे व्यवहार हुए आई एवं वी सहित shall व्यवहार करू जेते बेले हमें सिंपल फ्यूचर रे व्यवहार करू इंडेफिनिट फ्यूचर इंडेफिनिट रे ठीक अछि बट whenever we are using will जेते बेले हम will व्यवहार करूचे का आगे आई पर will व्यवहार करूचे in this case what happens it shows determination that means if you are using I will go that means you must go there you are determined to go there तमे जीवा पई दृढ़ निश्चित you are certain to go there that is the case when we use okay and I shall go it is simple future okay now वर्तमान आमे जीवा मु जेमति कहउतली कोन the modal will is used in the प्रथम जिंस हला plain future simple future रे लिखाई छी the second rule is to express willingness intention of the speaker एटा होची सही केस नंबर 2 रे willingness or intention of the speaker এই केस रे हमें व्यवहार करिबा I will go third rule कोन कहउची बिले third rule होची to express for making a request giving an order third rule 3 number rule कहउची so making a request or giving an order number 3 making a request and giving an order making a request or giving an order आदेश दवा पाई अनुरोध दवा पाई जेमिति will you have tea so what happens here in this case you can say this is a request so will you do me a favor this is also a request will you lend me a book so these are the senses giving an order rule number 4 is to express the present habit वर्तमान रो किछि अभ्यास पाई प्रेजेंट हैबिट पाई भी आमे व्यवहार करू जेमति दे विल टॉक 4 hours about clothes and films आ लुगा माने मूवी बाबद रे से माने घंटा 4 घंटा कथा माने कथा होजोदी माने घंटा से कथा हेबे yes or no when the cat is away the mice will play गोटे वर्तमान अवस्था जिते बड़े माने बिले न थाए बाघ घरे मेरिगो नाट आम जमी कहे बाघ नथिले मेरिगो नाट करे रूल नंबर 5 टू एक्सप्रेस assumption or probability to express assumption assumption or probability assumption कहली कोन assumption assumption कहली कोन इच्छा probability माने assumption कहले गोटे जिंस को assume करबा in the sense that can be told ओडिया रे कोन को prediction जहा को जाय पारे so to express assumption and probability and rule number 6 to express the prediction rule number 6 is what to express the prediction जेमति I will it will rain tomorrow आसंता केले वर्षा हबो probability अछि then it will get the first class I will get the first class in annual exam mo annual exam रे मु first class पाइबी rule number 7 to express general facts or truth to express in somehow to a condition general facts and truth एवं truth को व्यक्त करबा पई मध्ये आमे व्यवहार करता कोन will
ଯେମିତି ଅଏଲ୍ ୱିଲ୍ ଫ୍ଲୋଟ୍ ଅନ୍ ୱାଟର, ଅଏଲ୍ ୱିଲ୍ ଫ୍ଲୋଟ୍ ଅନ୍ ୱାଟର। ଯଦି ମାନେ ଅଏଲ୍ଟାକୁ ପକେଇବ ତମେ ପାଣି ଉପରେ, ଇଟ୍ ୱିଲ୍ ଫ୍ଲୋଟ୍, ଅଏଲ୍ ୱିଲ୍ ଫ୍ଲୋଟ୍ ଅନ୍ ୱାଟର। ଦେନ୍ ପିକ୍ସ ୱିଲ୍ ଇଟ୍ ଏନିଥିଙ୍ଗ, ଘୁଷୁରୀ ମାନେ କିଛି ବି ଖାଇଦେବେ, ପିକ୍ସ ୱିଲ୍ ଇଟ୍ anything. So these are the example of general facts or truth. Okay, ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଲେ ଯିବା ୟୁଜେସ୍ ଅଫ୍ ଶାଲ୍ ପାଖକୁ। ସମୟ ନାହିଁ, ବହୁତ କମ୍ ସମୟ ଭିତରେ କୋର୍ସ ସାରିବାର ଅଛି ମୋତେ। So uses of shall, uses of shall, shall ର ବ୍ୟବହାର, shall को कहते हैं, in which condition we will use we are to what use shall. First thing, to express plain future for the first person, to express plain future for the first person, plain future मुझे आगु कही सारी फास्ट पर्सन र प्लेन फ्यूचर रे आमे व्यवहार करूँ शाल, आई एवं वी, विथ आई एंड वी, आई एवं वी सहित आमे व्यवहार करूँ कौन शाल। नेक्स्ट इज शाल इज समटाइम्स यूज फॉर सेकंड एंड थर्ड पर्सन व्हेन टू एक्सप्रेस कमांड, प्रॉमिस, थ्रेट और डिटरमिनेशन। कमांड, प्रॉमिस, थ्रेट और डिटरमिनेशन मन रखा। कमांड, प्रॉमिस, थ्रेट, डिटरमिनेशन। यही जगह इन दिस कंडीशन वी कैन यूज शैल विथ थर्ड पर्सन और सेकंड पर्सन आल्सो। थर्ड आउ सेकंड पर्सन रे हमें व्यवहार करिवा। जेमिति ही विल किल यू, दे विल किल मी, सो दिस इज व्हाट मीन्स थ्रेट। नंबर 3 नंबर कौन, टू एक्सप्रेस स्पीकर्स विशेस, स्पीकर इच्छा व्यक्त करने, स्पीकर्स विशेस लाइक आई शैल गिव यू माय टेक्स्ट, मो बही तुमको दे देवी, आई शैल गिव यू माय टेक्स्ट। देन वी शैल हेल्प हिम, आमे हेल्प करबा ताको, वी शैल हेल्प हिम। सो एटा थिला रूल नंबर 3। रूल नंबर 4 कौन, रूल नंबर 4 टू एक्सप्रेस द सेंस ऑफ ए प्रेडिक्शन, सेंस ऑफ ए प्रेडिक्शन लाइक आई शैल मिस यू, तुम गला पर मु तुमको बहुत मिस करबी, आई शैल मिस यू। And you can say I shall you shall get the first class in annual exam, we shall get the first class in annual exam, अरे आमे पाइबा, आमे निश्चित पाइबा। Then to express the sense of permission, to express the sense of permission the word sense of permission, shall we go to house, जीवा की if will permit we shall go to house, आमे घर को हसीबो। shall I read the book, बहीटा पढ़ी पारे कि। सो इन दिस केस टू एक्सप्रेस द सेंस ऑफ परमिशन। देन रूल नंबर 6 टू एक्सप्रेस द सेंस ऑफ ए प्रॉमिस, टू एक्सप्रेस द सेंस ऑफ ए प्रॉमिस, प्रतिज्ञा व्यक्त करवा, टू सेंस ऑफ ए प्रॉमिस। सो आई शैल टेक यू आउट संडे, अरे संडे रे आमे बुलिबा पई जीवा, आई शैल टेक यू ऑन संडे। नंबर 7 टू एक्सप्रेस द सेंस ऑफ ए सजेशन, to express the sense of a suggestion. Let's catch the train, shall we? Let's catch the train, chalo. Let's me read the book, shall I? मु पढ़िबि कि, पढ़िबा पे मते अनुमति दियो, shall I? पढ़िबि कि? Okay. This is the uses of shall. The last one is there. Last one कौन? Question with shall or I we are used to ask the will of the person addressed. जैसे बड़े shall और will लगे कि हमें क्वेश्चन करूँ, सेते बेले जने लोकर इच्छा जानिबा पई हमें व्यवहार करथौ, इच्छा जानिबा पई हम व्यवहार करथौ जते बेले whenever we use shall and will with question. Then comes the term uses of can केते बेले व्यवहार करिबा, uses of can रो व्यवहार, uses of can रो व्यवहार, can कहले पारिबा बी एबल टू, जेमति मु आगु कहि सारछि तुमको। फर्स्ट थिंग टू एक्सप्रेस एबिलिटी और कैपेसिटी, एबिलिटी नंबर 1 एबिलिटी और कैपेसिटी। टू एक्सप्रेस एबिलिटी और कैपेसिटी वी यूज कैन, जेमति कैन यू रिमेंबर हिज नेम, तार मने तार नाटा बहुत लंबा मने रखि पारिबो कि तमे। आई कैन रन लाइक ए डियर, आई कैन रन लाइक ए डियर, I have that ability, I can run like deer, deer सहित मु चेस करि पारि, deer भले मु दौड़ी पारि। रूल नंबर 2 कौन, टू एक्सप्रेस परमिशन। नंबर 2 टू
एक्सप्रेस परमिशन परमिशन दवा पाई टू एक्सप्रेस परमिशन. सो व्हाट इज देयर कैन आई रीड योर बुक कैन आई रीड योर बुक तुम बहीटा मु पढ़ी पारिबी कि देन यू कैन गो नाउ तुम जाई पारो परमिशन देलो तुम जन को यू कैन गो नाउ सर मे गो यस यू कैन गो नाउ. देन कैन आई बोरो योर डिक्शनरी तुम डिक्शनरी मुझे मागी पारिबी कि नहीं पारिबी कि कैन आई बोरो योर डिक्शनरी. सो दिस इज व्हाट टू एक्सप्रेस परमिशन. देन rule number 3 to express possibility to express possibility कौन possibility संभावना व्यक्त करबा पई to express possibility. So it can be true नाइ रे से मिछो गो यार सत्य न it can be true. So possibility आमे व्यक्त करू छै. You can say he can go to Puri से पुरी जाई पारे yes संभावना अछि he can go to Puri. Anyone can do this sum ए गणितटा बहुत सहज anyone can do this जे भी करि परिबो. So this is what possibility. Rule number 4 to make a request to make a request अनुरोध व्यक्त करबा पई to make a request अनुरोध व्यक्त करबा पई जेमती can you tell the address please address ता मते कहि परिबो can you tell the address please. So can you give your pen please can you give me your pen please तुम मोर पेन ता दिके देई परिबो. So this is what request. Then to express the form of phrase to express the form of a phrase number 5 to express the form of a phrase what a phrase रे व्यवहार करि परिबा हमें जेमिति फॉर एग्जांपल I can't help stealing this is a can't help stealing this is the phrase I can't help stealing. So it is an adverb phrase can't help stealing. So in this case also you can use. Let us go to uses of may ର ବ୍ୟବହାର ଆଉ 8 मिनिट रहिला पिले देखिबा नहले काली 11टा बेले पुनी क्लास करिके सारी बायाको ठीक अछि. सो कोन uses of may ର ବ୍ୟବହାର may केते बेले व्यवहार करिबा हमें. The modal may is used in the following grounds like to express permission. First one to express permission दवा पाई to express permission जनकु permission दवा पाई permission दवा क्षेत्र रे. So you may come in now तमे वर्तमान आसी पारो मोर काम सरी गलानी you may come in now. So you are giving permission. Yes or no? Number 2 may I go home sir yes you may I go home sir yes you may. So in this case okay then number 2 is to express possibility. Number 2 to express possibility संभावना व्यक्त करिबा पाई to express possibility. So संभावना व्यक्त it may rain tomorrow आसंता काली वर्षा ही पारे it may rain tomorrow it will rain tomorrow सेठी probability अछि it may rain tomorrow here also probability possibility is there. Guru may be in the school guru school रे थाई पारे getting me. Then I may get the first class मु first class पाई पारे मु भलो पढुची संभावना अछि पाइबार. Yes or no? Okay rule number 3 to express wish or prayer to express wish or prayer to express wish or prayer wish कहले इच्छा prayer कहले प्रार्थना जेमति हम को यूज करछु पिले सब बेले may God bless you नहीं may you be happy तुम खुशी रहो may you live long तुम सब बहुत दिन पाई बंचो. So these are to express wishes or prayer इच्छा व्यक्त करिबा पई प्रार्थना करिबा पई. Then rule number 4 to express purpose purpose कहले कोन पिले उद्देश्य purpose कहले उद्देश्य व्यक्त करिबा पाई जेमिति हम कहि परिबा please allow me sometime so that I may solve this problem. Please allow me sometimes मते किसी समय दियो that I may solve the problem मो समस्या को समाधान करि देबी. So yet वो एक्सप्रेस पर्पज गोटे रीजन कहले हमें जे काहे कि मते टाइम दरकार कारण मो से समस्या को समाधान करबा पे मते समय दरकार. Yes or no? से बोलिया विवेक वर्क्स हार्ड सो दैट ही मे सक्सेस
से गोटे पर्पज अच्छी पाखे से वर्क हार्डवर्क कहीं दैट ही मे गेट सक्सेस से सक्सेस पाइब कृतकार्य हम बोलिक ये सर नो लेट अस गो द यूजेस ऑफ वुड दिस आर द यूजेस ऑफ मे रो व्यवहार थिला वर्तमान जीवा यूजेस ऑफ वुड वुड रो व्यवहार देखिबा पिले द यूजेस ऑफ वुड यूसेस ऑफ वुड पिले मु मेन पॉइंट ही काली कहूची तुम मानकू बहुत सारा पॉइंट अच्छी ता भीतर मिस करके जाऊँ बिकज विदिन हाफ एन आवर द क्लास एटलिस्ट जदि भलसे क्लास करवा चारिटा क्लास थी यहाँ तो आई वांट टू कंप्लीट इन टू क्लासेस so you would the modal you know would the modal would is used in the following context. What are the context? Let's see. First one, to express past habit. First one is to express past habit कौन past habit अतीतर कौन से अभ्यास व्यक्त करने आम would व्यवहार करिथाओ जेमिति when I was a child I would read all times. When I was a child I would read all times. मुझे जब पिला थिली मु सबु बेले पढ़ुथिले वर्तमान ना पढ़ु नाही. Number B, Mr. Pradhan would teach English every morning. Mr. Pradhan would teach English every morning. प्रत्येक सकाळे से पढ़ुथिले. He would go out for a walk every morning. से सबु दिन सकाळे walk जाउथिला. Getting me? So to express a past habit would is used. Okay. Rule number 2. Rule number 2 gonna to express unreal condition type 2 conditional clause रे unreal condition व्यक्त करिबा पई to unreal condition or you can say type 2 condition पाई type 2 condition कौन पिले if man had wings he would fly. If man had conditional clause if man had wings मनीष पाखे जदि कौन था डेणा था he would fly. Getting me? So this is unreal condition. मनीष पाखे डेणा नहीं मनीष उड़ी पारे नहीं simple. 2 नंबर कौन if I were a tiger. If I were a tiger मु जदि बाघ हेई थांती मु बाघ नुह. If I were a tiger I would live in the forest. मु जंगल रे रही थांती मु जदि बाघ हेई थांती मु जंगल रही थांती मु बाघ नुह से मु घरे रहउछि. So this is what unreal condition or type 2 condition in conditional clauses. Okay. Rule number 3, to make a polite request. To make a polite request कौन polite request रे व्यवहार हुए. Would you lend me your bike? Would you lend me your bike? तुम गाड़ी मत टिके दब कि would you take a light meal? टिके खाद्य खाइब कि अल्प टिके खाइब कि. So would you take a light meal? Would you do me a favor? मत टिके साहाय्य करिब कि. Would you do me a favor? This was the what to make a polite request. Rule number 4, to express determination. Number 4, to express determination. To express determination कहले कोन दृढ़ इच्छा व्यक्त करिबा पाए जेमती I would get the first class in annual exam. I would get the first class in annual exam. मु बोर्ड परीक्षा रे जेमिति हो फर्स्ट क्लास पाइबी. I would get the first class in annual exam. Number B, Mohan would finish it whatever happens. Mohan would finish it whatever happens. Brahma would finish it whatever happens. Khirasundu would finish it whatever happens. जहाँ भी condition हो जहाँ भी हेले से माने एटा सारीबे. So this is what determination. I would finish it in any condition, whatever condition might be. I would finish it. Okay. Rule number 5, to express probability. Rule number 5 कौन? To express probability. To express probability कौन पिले एटा? To express probability he would be at home now. से घरे थाई पारे वर्तमान संभावना अछि. He would be at home now. The examiners would be over now. The exams would have been the examination would be over now. परीक्षा सरी जाई थिबो. Rule number 6, to express wish or desire. 6, to express wish or
डिजायर इच्छा किंबा आग्रह व्यक्त करबा पई टू एक्सप्रेस विश और डिजायर कोन बिले जमते आम व्यवहार करिपारिबा कोन टू एक्सप्रेस विश और डिजायर ही वुड डू दैट फॉर यू ही वुड डू दैट फॉर यू से तुम पई एटा करि दबो तापर आउ कोन अछि वुड दैट आई वेयर अ प्रोफेसर वुड दैट आई वेयर अ प्रोफेसर मो जदी सेटा हेई थांती बोले प्रोफेसर हेई थांती ओके रूल नंबर 7 टू एक्सप्रेस प्रेफरेंस रूल नंबर 7 टू एक्सप्रेस प्रेफरेंस 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 कहले कौन पिले प्रेफरेंस माने गोटे जिनस ऊपर आ गोटे जिनस ऊपर जमती आई प्रिफर ब्लैक बोर्ड देन व्हाइट बोर्ड और आई प्रिफर ब्लैक बोर्ड टू व्हाइट बोर्ड टू ब्लैक बोर्ड दिस इज व्हाट प्रेफरेंस सो ही वुड रादर स्टार देन बेग से भिक मागिबा ठारू भोकेरे मरि जीवाटा ताको माने प्रिफर करिवो से यू कैन से आई वुड प्रिफर डेथ टू डिजेनर अपमान पाइबा ठारू मु मरि जीवाटा प्रिफर करिवि रूल नंबर 8 कौन बिले टू एक्सप्रेस पोलाइट सजेशन एंड इनविटेशन नंबर 8 पोलाइट सजेशन एंड इनविटेशन पोलाइट सजेशन और इनविटेशन पाई do it again and again very good Gautam yes so polite suggestion and invitation निमंत्रण एवं भद्र सहकार रिक्वेस्ट करबा पई व्यवहार करबा में would you like meat मांस तुमको भल लगे कि would you like meat would you study regularly बेटा would you study regularly नियमित भाबे पाठ पढ़ लास्ट रूल एंड टुडेज क्लास रा लास्ट पॉइंट मु कहबी तापर बाकी जिंस काली आलोचना करिया पिले 9 नंबर टू एक्सप्रेस अनविलिंगनेस रिफ्यूजल अनविलिंगनेस अनिच्छा अनविलिंगनेस कहले अनिच्छा एवं रिफ्यूजल कहले मना करिबा अनविलिंगनेस एवं रिफ्यूजल पाई भी व्यवहार हेई थाय सो रूल नंबर 9 अनविलिंगनेस एंड रिफ्यूजल पाई व्यवहार हेता है कौन वुडटा व्यवहार हेता है जमती आई आस्क्ड हिम टू लैंड मी द टेक्स्ट बट ही वुड नॉट आई आस्क्ड हिम टू लैंड मी द टेक्स्ट बहीटा दवा पे मुझे कहली किंतु मते से देला नहीं ही वुड नॉट द स्टूडेंट आस्क्ड मी टू फिनिश दिस सम बट आई वुड नॉट पिला माने मते कहले मैथमेटिक्स सारिबा पई द स्टूडेंट आस्क्ड मी टू फिनिश द मॉडल बट आई वुड नॉट पिला माने मते मॉडल सारी दियंतु बोली कहले बट मु करि पारिली नहीं तो पिले आज ऑलरेडी 32 मिनिट रो कंस्टेंट क्लास हो गला तो बाकी तक जहाँ रहा आसंता काली आलोचना करवा 11टा बेले ठीक 11टा बेले सी यू देया बाय बाय।